Christ our only hope in our families. गतकाली आमाने ख्रीष्ट आमानक परिवार मध्यरे आशा विषय शिखिथिलु. We made a comparison between the father, that is another Asa, and the son Jehoshaphat. The similarities we saw almost 10 points. गतकाली आमाने बापा आशा एवं तांको पुओ मध्यरे आमाने 10टी पॉइंट्स शिखिलु. We learned that it was because of the father Asa, Jehoshaphat had learned to obey and seek and pray and fast. यहा तांको बापा आशंको पाई बोले जेहोशपथ मध्य तांको उपवास प्रार्थना शिखुथिले. So it's all because the father Asa, the Jehoshaphat learned, because he set an example to Jehoshaphat. यहा केवल तांको बापा आशंको पाई बोले जेहोशपथ मध्य सब विषय शिखिथिले. God was leading Jehoshaphat to behold the life of Asa more and more. और जेहोशपथ को परमेश्वर परिचालना करुथिले आशांको जीवन शैली पालिबा पाई. Okay, let's come back and revise those 10 points in a nutshell. पुनर्बार हमारे से 10टी पॉइंट को छोटो मा क्षुद्र भाବରେ देखिनबा. Both were seeking God. दुई जन राजा मध्य परमेश्वर को अन्वेषण करुथिले. Both kept the commandments of God. दुई जन राजा मध्य परमेश्वरଙ୍କର वाक्य बा आज्ञा पालन करुथिले. Both removed the high places. In other words, both removed the idol images. They were against idol worship. दुई जन राजा मध्य उच्च स्थान एवं मूर्ति पूजा को भांगिथिले. Both built cities. दुई जन राजा मध्य नगर निर्माण करिथिले. And during their times there was no war. सेमानको समय रे युद्ध नथिला. Both had armies, mighty men. दुई जन राजा मध्य तांकर सैन्य दल थिले. Both were praying people. दुई जन व्यक्ति मध्य प्रार्थनामय व्यक्ति माने थिले. During their life, during the both of their life, God fought for them. दुई जनक समय रे मध्य परमेश्वर युद्ध करिथिले. God was working with both of their lives. परमेश्वर दुई जनक मध्य रे कार्य करुथिले. So we see through the Holy Spirit, God was working with them. हमने देखो छु पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर तांक मानक मध्य रे कार्य करुथिले. So there were almost some 10 similarities we saw in the life of Asa and Jehoshaphat. जेहोशपथ एवं आशा को जीवन रे प्राय हमें 10टी समान विषय देखिथिलु. Yesterday we did not read this text, and we have a direct text where Jehoshaphat copied the ways of Asa. That is in 2 Chronicles chapter 20 verse 32. द्वितीय वंशावली 20 तार 32 रे लेखा अछि कि जेहोशपथ तांको बापा आशा को जीवन शैली को अपनाई थिले. Somebody read it. कुड़ियार 32. जेहोशपथ अपना पिता आशांकर पथरे चलिले वो तहिरु विमुख न होई सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे यथार्थ कर्म कले. So in 2 Chronicles chapter 20 verse 32 says,
I'm reading in English. And he walked in the way of his father Asa. So Jehoshaphat copied. He walked in the way of father, that is Asa, right? So he copied. जेहोशाफात तांको पिता आसाको अनुसारे बा पत्तो अनुसारे चालिले. So the question comes here. प्रश्न Is उठे our life कोन आम जीवन is our life is being reflecting the character of God, where somebody can copy that in their life? कोन आमानकर जीवन ख्रीष्टन को बा परमेश्वर को दर्शाउची जे कि आम जीवन को अन्य लोक देखि कि जीवन यापन करिवे. Jehoshaphat copied, right? Now can somebody copy our life? जेहोशाफात जेंति कि तांको बापांको जीवन कॉपी कले कोन अन्य जन आम जीवन को कॉपी करिवे कि? Okay, that was our questions yesterday, right? ताहा आमानकर प्रश्न थिला. Okay, we'll go to the today's topic. आज आमानकर प्रसंग दिबा. Today's topic is Christ our only hope. Always is Christ our only hope. Always, all the time. कोन ख्रीष्ट आमानकर आशा सब बेले. आजिर प्रसंग. So that is what we are going to study today. ए विषय को नै कि आमे आज पढिबा. Before we pray, आमने प्रार्थना करिबा पूर्व I request if you have any questions or if you want to study any topics or anything you are interested, anything, okay? Even if you have any prayer request, you can put it in the chat box. In the coming days, we will consider those questions and we'll give answer. And we will also join and study. ଆଉ प्रार्थना पूर्वरु आपण मानक गोटे अनाउंसमेंट जार जदि प्रार्थना अनुरोध अछि बा प्रश्न अछि बा किछि विषय बाइबल विषय सिकिया पे चाहछंती आपण माने चैट बॉक्स रे लिखि पारंती. आपनकर क्वेश्चन अनुसार रिक्वेस्ट अनुसार हमने आगंतुक दिन रे अरेंज करिवु. Let us pray. प्रार्थना करिबा. Father in heaven, we thank you so much for this time. Thank you so much for this Sabbath. Thank you, Lord, for bringing all of us together to learn about you. It is because of your grace that we are connecting ourselves to the Zoom. Father, you are so gracious and wonderful and teaching us many, many things. Father, we had never thought that you would learn from Jehoshaphat many things that you are teaching us. Lord, you please help us to understand this. Lord, it is only through you that we have been studying and you are helping us in all the ways possible. As we study today also, Lord, may your Spirit, may the Holy Spirit help us. May the Spirit of God help us, Father, to study and understand the lesson today. May you be our shelter. May you be our guide. And Lord, you please teach us and you guide us. Thank you, Daddy, for all the things that you have given. Encourage all of us here. Lord, may the Holy Spirit help us, Daddy, to study today's topic. Lord, you prepare all of our hearts as we study this. We pray in Jesus' name. Amen. So in our first day, we are on the 5th day. In our first day, we studied, is Christ our only hope when we have everything with us? आमने आज पंचम दिन अछु आ प्रथम दिन रे आमे देखितिलु कोन ख्रीष्ट आमानकर आशा बा भरोसा जते बेले आमानकर सबु अछि. On our second day, we studied, what should I do when Christ my only hope? आ द्वितीय दिन आमे देखिलु मु कोन करिवि जते बेले ख्रीष्ट मोर भरोसा भूमि बा आशा. On the third day, we studied, who is the only hope of end time people? आ तृतीय दिन आमे देखिलु किए शेष दिन बा शेष समय रो लोक मानक पई आशा अटंती. On the fourth day, we studied, is Christ the hope of our family?
चतुर्थ दिन आमे पढिलु कोन ख्रीष्ट आमनक परिवार पई आशा. So we are on the fifth day. Is Christ our only hope, always, all the time? आज हमर पंचम दिन देखु कोन ख्रीष्ट आमनकर आशा सबु बेले बा सबु दिन. Tomorrow we will be studying. We'll make a similarities, a comparison between Jesus and Jehoshaphat. आसंता काली आमने जीसु को एवं जेहोशाफात को मध्य रे आमने समानता देखिबा बा तुलना करिबा. There are 15 points where we would understand the life of Jesus is showed in the story of Jehoshaphat. 15 टी पॉइंट अछि आमे देखिबा जीसु को एवं जेहोशाफात को मध्य रे वर्णना करा जाय अछि. Okay, let us go to our study today. आज मनकर शिक्षा बा शिक्षा रे जिबा. We are going to pick 3 incidents from the life of Jehoshaphat. आमने 3 टी घटना देखिबा जेहोशाफात को जीवन रु. One incident that is the well known which we have been studying, that is from 2 Chronicles chapter 20. आ ता गोटे विषय आमे पढि आसी अछु जहा द्वितीय वंशावली 20 अध्याय रु. Let us go to the first incident. आमने प्रथम घटना को देखिनेबा. 2 Chronicles chapter 20 verses 1, 2 and 3. द्वितीय वंशावली 20 अध्याय 1, 2 एवं 3. अनंतर मोआब संतानगण ओ अम्लान संतानगण ओ सेमानक संगे अमानिय केतेक लोक जेहोशाफातक प्रतिकूल रे युद्ध करी बाकु आसिले. एतिरे केतेक लोक जेहोशाफात को संवाद दे कहले समुद्र से परिस्थित आरम देशरु एक महाजनता आपणक प्रतिकूल रे आसुछंती. आउ देखंतु से माने सत्सन तामर रे अछंती. ताहिरे जेहोशाफात भीत होई सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिवारकु प्रवृत्त हेले. पुणे यहूदार सर्वत्र उपवास घोषणा करिले. Okay. In the second verse, we see the word great multitude. Great multitude is coming against Jehoshaphat. आ द्वितीय पद रे आमे देखुछु कि अनेक लोक जेहोशाफात को विरोध रे आसु अछंती. We have that word great multitude. महाजनता. Even if you read this word great multitude, it is repeated even in the 12th verse. Can somebody read it? 12th verse. 12 पद रे मध्य महाजनता पुनर्बार बा पुनरुक्ति अछि. हे आंभ मानकर परमेश्वर तुम्बे कोन ए मानकर विचार करिवो नाही. कारण आंभ मानकर प्रति कूल रे आगत ए बृहत दल विरुद्ध रे आंभ मानकर कोनसी पराक्रम नाही अथवा कोन करिवा को हेबो एहा आमे माने जानु ना हो. केवल तुंब प्रति आंभ मानकर दृष्टि अछि. Okay, even in this verse also we find that word great multitude, right? Do you have that word great multitude? Mahajan, you know. In the English, महाजनता बा एक पद रे बृहत दल बोली दिया जाय अछि. Okay, in the English Bible, the same word is used in the second text as well as and the 12th text. Okay. इंग्लिश बाइबल रे गोटिए शब्दटी दिया जाय अछि. Now let us go to one more verse also. Again, the word great multitude used in the 15th text. आ 15 पद रे मध्य पुनर्बार से शब्दटी दिया जाय अछि महाजनता.
तो से कहले हे समग्र यहूदा और जेरूशलेम निवासी गण तुम्हें मैंने आओ हे महाराज यहोशाफाट तुम्हें सदा प्रभु तुम मान को एक कथा कहती यही महाजनता सकाशो तुम्हें माने भय न कर कि निराश न हो कारण यही युद्ध तुम मानकर नुहे मात्र परमेश्वर। Do you have that word great multitude again in the 15th text? 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାଜନତା। Yes. So Yes. in the second text and in the 12th text and in the 15th text, the word great multitude is repeatedly used. बारंबार पुनरुक्ति करा जाय अछि द्वितीय पद 13 पद एवं 15 पदरे महाजनता विषय रे। Now remember what Joseph did when he faced the great multitude. He began to seek God in prayer and fasting, right? Fasting, don't forget. मन रखंतु जेते बेले महाजनता को जोसेफ समीकरण करूछंती जोसेफ कोन करूछंती उपवास एवं प्रार्थना करूछंती। Now this great multitude came to fight against Jehoshaphat, right? ए महाजनता जोसेफଙ୍କ विरोध रे युद्ध करिया पे आसीथिले। So it was a problem. It was not an ordinary problem. Great problem faced by Jehoshaphat. यह साधारण समस्या नथिला मात्र बहुत बड़ समस्या जोसेफ समीकरण करूथिले। Big problem. बहुत बड़ समस्या। Okay, there's a difference between small problem and big problem. Now this is very big problem. Great multitude. और छोट समस्या एवं महा बड़ समस्या रो भिन्नता अछि। Now when Joseph saw the problem was big, immediately he went and prayed and fasted. जेतले जोसेफ देखिले ए समस्या बहुत बड़ हेले तुरंत तांके जाई उपवास एवं प्रार्थना करिथिले। Because it appeared to him as though it was so big, so huge. कारण ए समस्या बहुत बड़ तांको दृष्टि रे देखा जाइथिला। For him it was big, but for God it was small. जोसेफଙ୍କ ପାଇଁ ए समस्या बहुत बड़ थिला मात्र परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ बहुत छोट थिला। For God it was not even small. It was nothing for God. परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ केवल छोट नहे यह किछि नथिला। So even we may face great problems in our life. For example, we are facing a great COVID. We say it's big, deadly COVID. But for God, it is nothing, not even small. It is nothing in front of God. वर्तमान आमे देखोछु कोविड प्रॉब्लम जाकी हम पे बहुत बड़ मात्र परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ यह किछि नहे। It may seem to us as though it looks so big where we cannot fight. It is true. But when you go to God, it becomes nothing in front of God. आमानक ପାଇଁ यह कोविड बहुत बड़ समस्या कारण आमाने यह को समीकरण करि पारिबा नै बा संभाली पारिबा नै मात्र परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ किछि नहे। But the question comes here, when you face a great problem, do we pray and fast individually and corporately in our life? प्रश्न उठे कोन एई परि बड़ समस्या आसे हमने व्यक्तिगत भाबरे एवं सामाजिक भाबरे उपवास एवं प्रार्थना करूछु कि? Do we allow God to fight the battle, or do we depend on ourselves to work against this COVID? हमने एई परि कोविड रोगरु निजे चेष्टा करूछु ना परमेश्वर को सुजोग दउछु ए कोविड कार्य करबा निमंते? When God can fight against the
against a great multitude, big problem, the same God can fight even against the COVID if we trust him, if we allow him to fight. जो परमेश्वर अनेक युद्ध को परास्त करथिले से परमेश्वर को यदि आमे सुजोग देबा से परमेश्वर से कोविड को मध्य परास्त करिबे. Let me ask another question. आ गोटे प्रश्न उठे. So when he faced a great problem, okay, he went and he prayed, right? जते बेले जियोसफत महा समस्या रे पडिथिले एवं ताके जाय कि परमेश्वर को निकट को प्रार्थना करिथिले. When we face great temptation, जते बेले हमने बहुत बड़ो परीक्षा रे पडिताउ, do we fast and pray? हमने कोन उपवास एवं प्रार्थना करू अछु. Examine, please examine. हमने निज को परीक्षा करिबा. Do we really fast and pray to overcome temptation? हमने परीक्षा एवं प्रलोभन को उत्तीर्ण होबा पई हमने कोन उपवास एवं प्रार्थना करूछु कि. I'm talking about big great temptations, okay, maha. बहुत बड़ा बा महान परीक्षा को बा परीक्षा प्रलोभन को कथा होछु. Satan might tempting you and me to commit some great big sin, but do we fast and pray to overcome that great sin? शैतान हमनको अनेक बड़ो समस्या बा पाप कार्य करिया पई आनी थाए, मात्र से समय रे हमने कोन उपवास एवं प्रार्थना करूछु कि. For some, great sin means adultery and murder. आ अनेक को पई बड़ पाप माने व्यभिचार एवं नरहत्या. But to God, even lie is a great sin. मात्र परमेश्वर को पई छोट बीच मध्य बड़ पाप. Even unrighteous anger is a great sin. आमे जदि अभेला रे जदि रागुथिबा ताहा मध्य पाप. Even bitterness is a great sin. आ निज को क्रोधित करूथिबा मध्य पाप. Even fighting each other, unkindness, great sin in the sight of God. एक कारकु झगड़ा करूथिबा एवं शांति रे नुनोथिबा ताहा मध्य पाप. Even unloving, great sin in the sight of God. अन्य मानको प्रेम न दर्शाइबा मध्य पाप. When Satan tempts us to commit this great sin, getting angry, to be impatient, to be unloving, to be unforgiving, do we fast and pray to God to overcome that? जेतबेले शैतान एपरि हमनको जीवन रे परीक्षा आनी थाए से समय रे हमने कोन उपवास एवं प्रार्थना करू अछु कि. Do we really pray and fast to overcome our sinful life? एवं प्रार्थना करू अछु. When somebody in the ICU, we love to pray and fast. जेतबेले जने व्यक्ति आईसीयू रे अछंती हमने प्रार्थना करिथाउ. When we have certain problem, we immediately want to fast and pray. आ जेतबेले हमनको जीवन रे समस्या आस्ते है हमें तुरंत उपवास एवं प्रार्थना करिथाउ. When our daughter wanted to get through the exam, we fast and pray. जेतबेले हमनको पुओ झियो माने परीक्षा लेखुछंती से समय रे हमने पास हुअंतु बोली प्रार्थना करिथाउ. But do we really fast and pray to overcome sin in our life? कोन सतरे हमनको जीवन रे पापरु बचियो पय हमने उपवास एवं प्रार्थना करिथाउ कि. Do we really fast and pray for our children to live a sinless life in Christ, to overcome sin in their life? हमने सतरे कोन हमनको पोछियो मानकर पाप बिना बा पाप शून्य जीवन यापन करिया पई हमने प्रार्थना करूछु कि. So we see in the first incident, we see Jehoshaphat faced a great problem and he depended on God.
आमने देखुछु प्रथम रे जोसेफ बहुत बड़ समस्या रे पड़िले एवं परमेश्वर को सहारा नेले। Now let us go to the second incident. आमने द्वितीय घटना को जीवा। So this is the first incident. The first incident, when he faced a great problem, he depended on God. Okay. प्रथम घटना रे आमे देखुछु जते बेले ताके महान समस्या रे पड़िले परमेश्वर को सहारा नेले। Now let us go to the second one. हमने द्वितीय घटना को देखिबा। Just like we face temptations, Jehoshaphat also faced temptations in his life. आउ जेमिति आमाने परीक्षा एवं प्रलोभन रे पड़ी थाउ से परि जोसेफ मध्य परीक्षा एवं प्रलोभन ताको जीवन रे सम्मुखीन हेतिले। In the first incident, Jehoshaphat depended on God because he thought his only hope was Christ, right? प्रथम घटना रे आमे देखुछु जोसेफ यीशु को ख्रीष्ट को सहारा नेले कारण ताके भाबिले ख्रीष्ट ही मोर आशा बा भरोसा। Okay, I'm going to take you out to the second incident, which is told in 2 Chronicles chapter 18, verse 1. द्वितीय वंशावली तार 18 तार 2 पद रे हमने द्वितीय घटना को देखिबा। आओ केतक वर्ष उतारे से समरिया देश को आहवंक कति को गले तयरे आहव तांक निमंते ओ तांकर संगे लोकमानक निमंते अनेक मेष ओ बलद मारिले ओ अपना संगे रामोत गिलियद जीवा पाए तांको मनाइले। Jehoshaphat had riches and honor in abundance. जोसेफ को अनेक धन संपत्ति थिला। So, because he had riches and honor, what he did? He allied himself with Ahab in a marriage alliance. जेहेतु तांकर अनेक धन संपत्ति एवं मान्यता थिला से जो ताके विवाह संपर्क अन्य मानक सह रखिले। Okay, he entered into a marriage alliance with King Ahab. आहाब राजा को सह विवाह द्वारा संपर्क रखिले। Okay, now who is this Ahab? Who is this Ahab? King Ahab. आहाब राजा किए थिले? Let us go to 1 Kings chapter 16 verses 29 to 33. 1 Kings chapter 16 verses 29 to 33. प्रथम राजा बोली 16 21 ରୁ 23। जिहुदार राजा आसांक अधिकार 38 वर्ष रे अम्रिंकर पुत्र आहब इस्राएल उपरे राज्य करबा को आरंभ कले ओ अम्रिंक पुत्र आहब समरियर इस्राएल उपरे 22 वर्ष राज्य कले। पुणे अम्रिंक पुत्र आहब अपना पूर्ववर्ती समस्त अपेक्षा सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि अधिक कुकर्म कले। पुणे नबाटर पुत्र जारेमियंक पाप पथरे चलिवार तांक प्रति हालुका विषय हैला और से सिदोनिय मानक इतिकजाल राजार कन्या इशबेल को विवाह कले ओ जाई बाल रो सेवा करे तांको प्रणाम कले। आओ से समय स्थित अपना निर्मित बाल रो Go ahead, please. आओ से समय स्थित अपना निर्मित बाल रो गृह रे बाल पाई एक यज्ञवेदी निर्माण कले। आओ आहब आश्रय मूर्ति निर्माण कले
ଓ ଆହବ ଆପଣା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ଜନକ କର୍ମ କଲେ। Okay, so now who is this Ahab? ଆହାବ କେ ଥିଲେ? He was the son of Omri. ଅମ୍ରି ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। He was also the king of Israel. ଇସ୍ରାଏଲ ର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। And what he did, the 30th verse says, he did evil in the sight of God more than କଣ all. କଲେ? 30 ପଦରେ କହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। So he did evil more than all who were before him. ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆଙ୍କେ କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ। And in the 31st verse it says that he married a woman outside the people of Israel. In other words, he married a Gentile woman, let's say idol worshipper. ଆଉ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବିଜାତି ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। The woman whom he married was not a true worshipper. She was an idol worshipper. She worshipped idol. Jezebel. ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରାଣୀକୁ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ। And the 32nd text says he set up an altar for Baal God. ଆଉ ବାଲ ଦେବତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। And the 33rd text says Ahab made a wooden image also. Image. ଆଉ 33ରେ କହେ ତାଙ୍କେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। I hope you all got a picture about King Ahab, right? ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ଆହାବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣି ପାରିଲେ। Who is King Ahab? ଆହାବ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? He was the king. He was the son of Omri. ଅମ୍ରି ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। He was the king of Israel. ଇସ୍ରାଏଲ ର ରାଜା ଥିଲେ। And he did evil before God more than the people who were there before. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କେ କୁକର୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କରୁ ଅଧିକ କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ। He married an idol worshipper, women who worshipped idols. ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। He built a temple for Baal God. ଆଉ ବାଲ ଦେବତା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। He made a wooden image. ଆଉ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। Now, please remember this. And now what Jehoshaphat did? Jehoshaphat entered into a marriage alliance with this king. ଆଉ ଜିହୋଶାଫାତ ରାଜା ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସହ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ। Let us go to one more Bible verse to understand about the character of Ahab. ଆହାବ ବିଷୟର ଚରିତ୍ର ବା ଗୁଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା। Let us go to 2 Chronicles chapter 19 verse 2. ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ତାର 2 ରେ କହେ, ପୁଣି ହନାନୀର ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜିହୋଶାଫାତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ କୋପ ଉପସ୍ଥିତ। This text is talking about Ahab. ଆହାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପଦସ୍ଥଳୀରେ କୁହାଯାଉଅଛି।
If you get little time, you can read it today night before you sleep. आज आमने सोइबा पूर्वरु जो समय पाउछु आमने संपूर्ण विषय पढिबा. We see here, Bible says that Ahab was a man who hated the living God, who doesn't love the living God. आहाब एमितिका व्यक्ति थिले जीवित परमेश्वर को कोनसी प्रकार भलो पाउ नथिले ताके घृणा करूथिले. But who was he? He was the king of Israel. ताके इस्राएल देशर राजा थिले. Israel was not a Gentile country. It was a country which known about the true God. इस्राएल देश परमेश्वर बा सत्य परमेश्वर को जानितबा देश थिले. But though Ahab knew about the true God, yet he walked in the path of idol worship, path of Gentiles. जेहेतु आहाब सब विषय परमेश्वर को जानितिले और सत्य विषय जानितिले हेले मध्य तांकर निज इच्छा रे जीवन यापन करूथिले. Remember once again, he was, for example, in our language, if we say he was the Seventh-day Adventist, in our language, if we say, yet he followed, he had idols in his life. आ अन्य भाषा रे सहज भाषा रे कहबा गले तांके सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थिले मात्र परमेश्वर को आज्ञा अनुसार जाउ नथिले बा मूर्ति पूजा तांको जीवन यापन रे थिला. He knew about the true God because he was a king of Israel, right? जेहेतु तांके इस्राएल रो राजा थिले एवं समस्त बा जीवित परमेश्वर को विषय रे से जानिथिले. Yet he worshipped idols. हेले मध्य तांके मूर्ति पूजा करूथिले. And he married a Gentile woman, an idol worshipper. एवं ताके जने मूर्ति पूजक स्त्री लोक को विवाह मध्य करिथिले. Do we do these two things even in our life today? आज वर्तमान आमान को जीवन रे मध्य एपरि करू अछु कि ए दुईटी जिंस. We also call ourselves Seventh-day Adventist Christians, right? आमे मध्य सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन बोली निजको गणना करिथाउ. Do we have idols in our life? आमान को जीवन रे से मूर्ति अछि कि? Do we keep, sometimes for some, Facebook is their idol. अनेक समय रे अनेक लोक मानक पई फेसबुक तांको पई मूर्ति सदृश. For some, WhatsApp is their idol. अनेक लोक पई व्हाट्सएप मूर्ति सदृश. For some, movies is their idol. अनेक लोक पई जागतिक सिनेमा सब तांको पई मूर्ति हेई थाए. For some, position is their idol. अनेक को पई तांको पदवी मूर्ति हेई थाए. For some, food is their idol. अनेक लोक पई तांको खाद्य मूर्ति हेई थाए. For some, their own friends, own husband or wife, they become their idol. They obey them than God. अनेक लोक पई ताको निज लोक बा स्वामी स्त्री परमेश्वर को न माने ताको स्वामी स्त्री बा ताको निज लोक को मानि थांती. For some, their work is their idol, job. अनेक लोक पई ताको निज चाकरी बा निज काम ताको मूर्ति हेई थाए. They work on Sabbath and they don't want to obey God. से माने विश्राम दिन रे निज कार्य करंती एवं परमेश्वर को वाक्य मानंती नहीं. So we may call ourselves an Adventist, yet we can have idols in our life. But time to examine. आमने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बोली निजको कहि थाउ एवं आमान को मध्य रे मूर्ति थाए. या समय अछि कि निजको परीक्षित करिबा पई. So time to yield our idols to God and ask God to destroy that idol, take that idol from us.
आ यह गोटे समय कि आमनकर जीवनर मूर्ति समस्त विषय परमेश्वर को समर्पण करिबा एवं परमेश्वर को सब विषय गुंचै देबा पय कहिबा। My dear children of God, we live in a time not to live in idols. Rather, this is a time to move away from idols. प्रिय परमेश्वर को लोक माने यह आमनकर मूर्ति सह जीवन यापन करिबा समय नुहे, मात्र समस्त मूर्ति छाड़ी परमेश्वर को सह रहिबा जीवन समय। For some young people, cricket is their idol, football is their idol, basketball is their idol, and for some, WWE is their idol today. आउ युवक युवती मानक पई क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एवं अनेक को पई WWE तांकर मूर्ति सदृश होई थाए। For some, cell phone games in cell phone is their idol. They don't read Bible, they don't want to pray, but that is their idol today. आउ अनेक को पई तांकर मोबाइल फोन रे जो गेम आसुची से गेम तांको पई मूर्ति, मात्र से माने पढंती नाही बाइबल बा प्रार्थना करंती नाही। Some girlfriend, boyfriend is their idol. अनेक पुओ संग झियो संग तांको पई मूर्ति सदृश हेई थाए। For some, their education is their idol. अनेक को पई तांकर शिक्षाता बा दक्षता तांको पई मूर्ति सदृश हेई थाए। But we claim ourselves Christians. मात्र आमने निजको क्रिश्चियन बोली कहि दाओ। But yet we never keep God as our only God, because we have many gods around us, even in our own life. मात्र आमनक परमेश्वर को केवल आम परमेश्वर रखिनो था, मात्र अनेक देवी देवता आमनक जीवन रे थांती। God will help us to overcome these idols if we take to God. परमेश्वर आमनक सहायता करिवे ए सब रु बाहरिया पय जतबेले आमने सब विषय परमेश्वर को जगतले समर्पण करिबा। Okay, so he not only worshipped idols, he also married the women who worshipped idol. केवल तांके मूर्ति पूजा कले नाही, मात्र आउ तांके मूर्ति पूजा करूथबा स्त्री लोक को मध्य बाहा हेतिले। This sin also taking place in Seventh-day Adventist Church. ए पाप मध्य सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली रे गटु अछि। People today, they get along, they choose a companion who worship idols, not true God. आओ आज मध्य सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली रे जे कि परमेश्वर को सत्य परमेश्वर को सेवा करू नाहंती बा मूर्ति पूजा करूछंती, सेमानक सह विवाह संपर्क रखिथांती। For the sake of marriage, they विवाह dip करिया them inside पाए the water. They dip them inside the water and they bring them to the church. आ विवाह पाए सेमानक कोन करिथांती, तांको बैप्टिज्म देइथांती। So they come to church for the sake of marriage. विवाह पाए बोली सेमाने मंडली को बा चर्च को आसंती। They don't come to church because of Christ, because they love Christ. No. सेमाने क्रिश्चियन को पाए बा क्रिश्चियन को प्रेम करिथिबारु सेमाने मंडली को आसंती नाही। They are joined to the church, but they are not joined to Christ. सेमाने मंडली सहित जड़ित हुवंती, मात्र क्रिश्चियन को सहित जड़ित हुवंती नाही। We live in a very, very critical time. हमने बहुत भयंकर समय रे बंचो छु। Time to yield ourselves to God and ask God to help us not to do that sin. यह समय परमेश्वर को समर्पण करी परमेश्वर को सहित जड़ित हेबा एवं हमन को पाप क्षमा नेबा। And we read in that the chapter that we read, 1 Kings chapter 6, chapter about Ahab that we read, 1 Kings chapter 16, that God was not happy with Ahab, right? प्रथम राजावली 16 अध्याय रे आहाब विषय हमने पढिलु कि परमेश्वर आहाबको ऊपरे खुशी नथिले बा दुख करूथिले। So when we do
these things, it doesn't please God. सेही परी आमे जदि एही परी पाप करिबा ताहा परमेश्वर को बा आनंददायक बा दुख प्रकाश आनी थाए. So now King Jehoshaphat, he entered into a marriage alliance with this king who worship idol. और जो राजा मूर्ति पूजा करुथिले से राजा को सह ताके विवाह संबंध रखिले. Let us go to Second Chronicles chapter 21. Let us read the verse 1. Let us read verse 1. द्वितीय वंशावली 21 अध्याय तार 1 को आमे देखिबा. अनंतर जेहोशाफाट अपना पितृ लोकंकर सहित शयन करी दाऊद नगरे अपना पितृ लोकंक संगे कबर पाइले. ताऊ तांकर पुत्र जिहोराम तांकर पदरे राज्य कले. After Jehoshaphat's death, who ruled? जेहोशाफात मरिला परे के राजत्व करूछंती बा शासन करूछंती. Who is the son of Jehoshaphat? It says Jehoram, right? जेहोशाफातଙ୍କ पुत्र जेहोराम. Now let us read the 6th verse. We will see that marriage alliance. हमने 6 पद पढिबा तांकर विवाह संपर्क बा संबंध विषय रे दिया अछि. पुणे से आहवंकर वंश तुल्य इस्राएल रो राजा मानक पथरे गमन कले. कारण से आहवंकर कन्या को विवाह कले वो सदाप्रभु को दृष्टि रे कुकर्म कले. What he did? Jehoram married whom? Jehoram married the daughter of King Ahab. एहाब राजांकर झियो को जेहोराम विवाह कले. That is a marriage alliance where Jehoshaphat and Ahab entered. और से विवाह संबंध रे ही जेहोशाफात एवं आहाब गद्वा मध्य रे हेतिला. What was the result of this marriage alliance? ए विवाह संपर्क बा संबंध रे कोन फलाफल थिला. Have you heard this in the church? Some young people say, if I marry her, idol worship, no problem, I will bring her into the church and the church will glorify. The church will have a double population, increase more and more. मंडली रे पुओ झियो माने कहंती मु विवाह हेबी जे माने मूर्ति पूजा करूछंती एवं मंडली रे आनिबी मंडली रो संख्या बढ़िबो बा मेंबरशिप बढ़िबो. But what Bible says, what happened with Joram when he married the king Ahab's बाइबल कोन daughter? कहे जेहोराम को कोन हला जेतबेले ताके विजाति को विवाह The कले. 6th verse says he did evil in the sight of the Lord. Evil in the sight of the Lord. चौपदर कहे परमेश्वर को दृष्टि रे कुकर्म कले. He did not do any good. He did only evil in the sight of God. कोनोसी भाबरे ताके भलो बा उत्तम कार्य कले नाही केवल परमेश्वर को दृष्टि रे कुकर्म करथिले. Not only that, even if you read the 4th verse, very sad thing is happening. Let us read the 4th verse. आ पुनर्बार तार द्वितीय वंशावली 21 रो 4 आमने देखिबा बहुत दुखर विषय बा घटना घटी अछि. एही जिहोराम अपना पितांकर राज्य रे आरूढ़ होई अपना को बलवान करते अपनार समस्त भात्रा को मध्य इस्राएल रो केतेक अधिपति को खड्ग करे बध कले. The Bible says he killed all his brothers with a sword and also some of the princes of Israel. बाइबल कहे तांको समस्त भाई मानकु खड्ग द्वारा बा कंडा द्वारा एवं अनेक इस्राएल रो अधिपति बा मंत्री मानकु मध्य मारी देथिले. This is what happens when we don't seek the Lord today. एई परि घटी थाए जतबेले हमने परमेश्वर को अन्वेषण करि न थाउ. That is why God counsels not to have a marriage alliance with the idol worshipper. से जो परमेश्वर अमानको मूर्ति पूजक लोक मानको सह विवाह संपर्क रखिया पई मना करंती. They may
increase the population of the church, strength of the church. But not only the strength of the church increases, even the evil increases in the church more worse than before. से माने मंडली रो संख्या बा मेंबरशिप बढ़ाती ताहा सेतिकी नुहे मात्र मंडली रे कुकर्म अधिक वृद्धि हेई थाए. Which is more important? कोटा बहुत माने गुरुत्वपूर्ण. Increasing the numbers of the people or decreasing the evil? मंडली रो मेंबरशिप वृद्धि हेबा बा मंडली रे कुकर्म वृद्धि हेबा. Never forget, when we enter into such marriage alliance, it would lead only to evil alone. No peace. मन रखिबा जते बेले एई परी विवाह संपर्क माने संबंध रखिबा आमन को मधे शांति आनिबो नाही मात्र कुकर्म वृद्धि हेबो. Remember this King Ahab, he was outwardly a true worshipper, namely by name he was a true worshipper, but in his life he was worshipping idol, right? मन रखतु एई आहाब राजा बाहर देखैबा पई केवल तांके गोटे सत्य उपासना करी थिले मात्र भितरे तांके सब मूर्ति पूजा करूथिले. Yet God was against this marriage alliance. हेले मध्ये परमेश्वर ए विवाह संबंध को विरोधी करूथिले बा प्रतिरोध करूथिले. So in our church there may be many worshipping namely the true God, but every marriage alliance is not accepted to God. सेही परी हम मंडली रे अनेक प्रार्थना उपासना करथिबे मात्र प्रत्येक विवाह संबंध परमेश्वर को दृष्टि रे ग्रहण योग्य नहे. Because they may be outwardly claiming themselves that they worship the true God, they may be coming to church paying tithe, but there may not be any transformation. God cannot accept such marriage alliance. God doesn't want us to unite with them. हेई बारे से मनकर प्रार्थना उपासना रे बहुत करंती दान दशमांश दियंती ता केवल बाहर देखिए पाए बाद अन्य को देखिए पाए मात्र ताहा सब परमेश्वर ग्रहण करंती नाही. So my friends, it is a high time to ask God whether to choose what sort of person in our life, in the life of young people, I'm talking about young people. युवक युवती माने एई परी समय आसी अछि कि परमेश्वर कि निज को प्रश्न पचरिबा कि परी व्यक्ति आ माने पाइबा. So do not ever have a marriage alliance with the idol worshipper as well as a name Christian, name Seventh-day Adventist. विजाति मानक सह एवं केवल क्रिश्चियन नाम सके क्रिश्चियन मानकु नामधारी क्रिश्चियन मानक सह विवाह संपर्क रखंतु नाही. Now in the first incident that we saw, when Joseph faced a great multitude, he depended on God, right? हमने देखो छु जेतबेले जोसेफ बहुत बड़ जनसंख्या को पाउछथि हेले परमेश्वर को ताके भरोसा रखुछथि. But now when he wanted to give his son Joram for marriage alliance, he did not fast and pray. मात्र ए कहानी रे देखु छु जोराम को जेतबेले विवाह करबा पई समय आसिला ताके उपवास एवं प्रार्थना करू नहांती. Did he ask God, can I have a marriage with the King Ahab? Did he ask God? परमेश्वर को अनुमति मांगिले कि मोर पुओ पई बा आहाब राजा को परिवार सह हमन विवाह संपर्क रखिबु. Did he fast and pray before the marriage alliance? उपवास प्रार्थना करिथिले कि he did not fast and pray. तांग उपवास एवं प्रार्थना करि नथिले. Joseph did not ask God whether can I have a marriage alliance with the Ahab or not. He did not ask. जोसेफ केबे मध्ये प्रार्थना करि नथिले कि आहाबंक सह हमन को विवाह संबंध रखिबु. The Bible says because he had riches and honor in abundance, he went
to the marriage alliance. So that riches, honor covered his eyes completely. जेहेतु तांकर धन संपत्ति एवं मान्यता तांकर चक्की को बंद न कलिला एवं परमेश्वर को दृष्टि रो तांके दूरेई गले. Even today also people are doing same mistakes. आछि मध्ये लोक माने सेम बा सेई प्रकार भूल करूछंती. No parents wanted to fast and pray before they give their children to the marriage alliance. कोनोसी बापा मा तांको पुओ झियो मानको विवाह देबा पूर्वरु उपवास एवं प्रार्थना करि न थांती. And if you ask young people how did you choose her, they would say, I saw her in WhatsApp, I saw her in Facebook. आ युवक युवती मानको जदि पचारिबा माने WhatsApp रे देखिलु बा Facebook रे देखिलु. I saw her in the college, I saw her in the street, I saw her in the bus. So we are in the marriage. आ तांको आमा कॉलेज रे देखिलु, स्कूल रे देखिलु बा बस रे देखिलु से जगो आमाने विवाह संपर्क रखिबु बा रखुछु बोली कहि थाउ. Some would say, my friend said, my friend showed, and so I got married. आ अनेक कहंती कि मो सांग माने कहिले से जगो आमाने विवाह हेलु. Nobody would say, I fasted and prayed and I asked God, whom am I supposed to marry? के And मते so कहंती I am in the marriage नाही relationship. Nobody would say that. के मते कहंती नाही कि मु उपवास एवं प्रार्थना कली एवं परमेश्वर मते दर्शेले. Just like Jehoshaphat, we have that life today. जोसफतଙ୍କ परि आमानकर जीवन मध्य. And then after marriage, just like Joram, we do only evil, not good in the sight of God. विवाह पर मध्य जेहराम परि आमाने परमेश्वर को दृष्टि रे भलो कार्य न करी कुकर्म ही करि थाउ. There are young people, if they see a girl or boy singing nicely, they immediately think, okay, this girl is very good, this boy is very good, so I can get inside marriage. अनेक युवक युवती माने जतबेले बडा पोछियो को देखंती भलो भलो गाउछंती हेले तांके भावंती कि मु विवाह संपर्क तांको सहित रखि परिबी. Devil also can sing nicely. Devil also can preach nicely. शैतान मध्य गीत गाई पारे, शैतान मध्य बाइबल प्रचार करि पारे. The true sign is life of Jesus, heart transformation, not just singing, not just praying. भलो चिन्ह होछि कि ख्रीष्टनकर जीवन शैली गीत गाइबा बा प्रचार करिबा नहे. So it is a high time to pray and fast and ask God for young people, Lord, what you want me to do? या गोटे बहुत बड़ समय कि परमेश्वर को पचारिबा परमेश्वर मु कोन करिबी. It is high time for every parents to fast and pray and ask God before you give your children to the marriage alliance. प्रत्येक परिवार बापा मां को र समय कि ताको पुओ झियो को विवाह पूर्व प्रार्थना करिवे. If you read the incident carefully, Jehoshaphat was a richest man, right? हमर जदि भलो भाबरे जदि पढिबा जेहोशफत बहुत धनी व्यक्ति थिले. Now let us read the second verse, 2 Chronicles chapter 18 verse 2. Now who is this King Ahab? Was he richest or not? आहाब राजा किए थिले द्वितीय वंशावली 18:2 पढिबा तांके धनी व्यक्ति थिले ना नाही. आउ केतेक वर्ष उतारे से समरिया देश को आवंक गति को गले तयरे आयव तांको निमंते ओ तांकर संगे लोकमानक निमंते अनेक मेष ओ बलद मारिले ओ आपणा संगे हिम्मत गिलियत को जीवा पाए तांको मनाइले. The Bible says Ahab killed sheep and oxen in abundance for him, for Jehoshaphat and the people who were with him. जेहोशफत पाके अनेक पशु तांके मारिले. So which means Ahab had sheep and oxen in abundance, more. अनेक मेंढा गाई गोरु तांकर अनेक थिला. So King Ahab also was the richest king. सेपरि आहाब राजा मध्य धनी राजा थिले.
both the kings are richest. दुई जन राजा मध्य धनी राजा थिले. Perhaps Josaphat could have thought, okay, I am also rich. And King Ahab also rich. So let me give my son to his daughter. जोसेफत भाबिले कि आहाब धनी व्यक्ति एवं मु मध्य धनी से जगु मु मझियो को मु तांको विवाह देबी. This is what happening today. सेही परि गोटो अछि आजि मध्य. People don't look for the sign where the individual is completely transformed or not, heart transformed or not. आ लोक माने ताकर संपूर्ण मन परिवर्तन को देखंती नाही. They look whether the individual is rich, whether the family is rich or not. लोक माने देखंती अन्य व्यक्ति धनी अछंती ना नाही. People look for high caste. Oh, this family has high caste, so let me go and let me give my daughter or children. आ लोक माने ए व्यक्ति उच्च जाति लोक से जगु मो पुओ छियो को तांको देबी बोली भाबंती. They look for caste, low caste. If there is low caste, no, I will not. जदि तांके नीच जाति थांती हेले तांके विवाह दियंती नाही. So people are looking for the sign of caste, money, riches before they get into the marriage. से परि लोक माने तांको जाति धन संपत्ति देखुछंती विवाह पूर्वरु. These are not true signs from God. God hates caste. परमेश्वर जाति सब घृणा करंती. यह सब परमेश्वर को चिन्ह नुहे. So God wants us to see whether the individual has a closer relationship with God, living the life of Jesus or not every day. परमेश्वर देखिबा ପାଇଁ चाहती कि परमेश्वरଙ୍କ सह तांकर संपर्क केमिति अछि एवं प्रत्येक दिन परमेश्वरଙ୍କ जीवन शैली तांकर जीवन यापन करूछंती ना नाही. So in the second incident, we see here Jehoshaphat did not depend on God. हमने द्वितीय कहानी रे मध्ये देखुछु जेहोशाफात परमेश्वरଙ୍କୁ भरोसा कले नाही. But in the first incident, he depended on God. प्रथम घटना रे हमें देखुछु परमेश्वरଙ୍କୁ भरोसा करिथिले. In the same way, we also sometimes we depend on God, sometimes we don't depend on God. We don't go and ask counsel from God. आ सेही परि हमें मध्ये बेले बेले परमेश्वरଙ୍କୁ भरोसा करिथाउ एवं तापर हमें परमेश्वरଙ୍କୁ भरोसा करि न थाउ एवं परमेश्वरଙ୍କର आशा नै न थाउ. Let us go to the third incident in the Bible. Third incident. बाइबल रो द्वितीय घटना को हमें देखिबा. Okay, let us go to 2 Chronicles chapter 18. Let us read the third verse. द्वितीय वंशावली 18 अध्याय तार 3 पद हमें देखिबा. इस्राएल रो राजा आहाब यहूदा रो राजा जेहोशाफात को कहले तुमे की मो संगे रामोत गिलिदियो को जीव तई रे से उत्तर कले मो तुम परी ओ मोर लोक तुमर लोक परी आंबे माने युद्ध रे तुमरे संगी हेबो. So here we see the king of Israel, that is Ahab, right? He called the king of Judah, Jehoshaphat, come, we will go against Ramoth Gilead. आहाब राजा जेहोशाफात को कहउछंती आसंतु आमाने युद्ध क्षेत्र को बा रामोत गिलियद को जिबा. Very important point. Please remember, immediately Jehoshaphat said, I belong to you. My people belong to you. So let us go to war. जेहेतु मु तमरो एवं मो लोक माने मध्ये तुमरो से जगु आमाने तम सहित युद्ध क्षेत्र को जिबु. Now, after he promised Ahab that, okay, I will come with you to war, then let us read the fourth text. हमने चतुर्थ पद पढिबा जते बेले जेहोशाफात को आहाब को प्रतिज्ञा करूछंती कि मु तम सहित युद्ध क्षेत्र को जिबी. 4 पद पढिबा.
ଆହୁରି ଜିହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଚାର। Okay, now after he promised, okay, I will come to Ramoth Gilead for war. Then Jehoshaphat said, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ସହିତ ରମତ ଗିଲିଆଦ କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଜିହୋଶାଫାତ କହୁଛନ୍ତି let us inquire, let us ask God whether can we go to war or not. Whether can we go against Ramoth Gilead or not. ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ରମତ ଗିଲିଆଦ କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପଚାରିବା। Okay, this Ramoth Gilead means it's a place of Syrians. ରାମତ ଗିଲିଆଦ ଗୋଟେ ସିରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବା ଜାଗା ଥିଲା। Now you know what Ahab did? ଆହାବ କଣ କଲେ? Let us read the 5th text and the 6th text. 6th and 7th. 5 ରୁ 7। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋତ ଗିଲିଆଦକୁ ଯିବା? କିଏ ବା ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବି? ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଛଡା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେହି କି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କେବେ ମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ସେ ଜିମରକୁ ପୁତ୍ର ମିକାୟ। ତହିଁରେ ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ରାଜା ଏପରି ନ କୁହନ୍ତୁ। So we see here Ahab called some 400 people, 400 prophets, and asked, ପ୍ରାୟ 400 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି। So Ahab said, asked, can I go to war? And all of them 400 people said, yes, we can go to war. You can go to war and you will win. ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ, ତମେ ଜିତିବ। But Jehoshaphat was not happy. ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାତ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। My friends, remember, when majority of people support you, you should be very cautious there, careful there. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଚେତେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। When more people, when majority say to you, do this, do that, please be careful. Okay, don't take any decision in your life. ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା କର ତାହା କର ଯଦି କହନ୍ତି, ହେଲେ ଦୟାକରି ସେ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। So Jehoshaphat was unhappy. He said, is there anybody apart from these 400 prophets? ଆଉ ଜିହୋଶାଫାତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ନଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏ 400 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? 7th verse says, 7 ପଦ କହେ, Ahab named a prophet. The 7th verse talks about a prophet named Micaiah. ମିକାୟ ନାମରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ 7 ପଦରେ କୁହାଯାଉଅଛି। King Ahab did not like Micaiah. ମିକାୟକୁ ରାଜା ଆହାବ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। Why? କାହିଁକି? Let us read the 13th text. ଆମେ 13 ପଦ ପଢିବା। ତ ମିକାୟ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଯାହା ମୋ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। Because Micaiah speak whatever God says to him.
कारण मिकाया कहिबे जहा परमेश्वर तांको कहिबे Micaiah, he doesn't speak for people, he speaks for God. मिकाया लोक मानक पई कहंती नाही मात्र मिकाया परमेश्वर को पई कहितांती He doesn't speak what people wants, but he speaks what God wants. ताके मनुष्य जहा चाहती ताहा कहंती नाही मात्र परमेश्वर कोन चाहती ताहा कहंती Now we also sometimes doesn't like people who speak what God says, right? आमे मध्य जहा परमेश्वर चाहती जदि लोक कहि थांती ता आमे पसंद करि न थाउ If we speak whatever they want, then they will be very happy. आमे जदि लोक माने जा चाहती ताहा जदि आमे कहि थाउ हेले लोक माने बहुत खुशी हि थांती But God's servants, they never please people. मात्र परमेश्वर को दास माने लोक माने Lord, संतुष्ट करंती नाही Now what did Micaiah say? मिकाया कोन गले Let us read the 19th text. हमने 19 पद पढिबा तैरे सदाप्रभु कहिले आहब जेपरि रामत गिल्दियो को जाई पतित हेबो एति पई किए तांको फुसलाइबो तैरे जणे ए प्रकार ओ अन्य जण से प्रकार कहिले Okay, the 18th, this verse, 19th verse says, Micaiah said that Ahab will die, he will be killed in the war. आ 19 पद रे हम देखुछु यहाब तांके युद्ध क्षेत्र रे मरि जिबे Which means God doesn't want them, King Ahab and King Jehoshaphat, not to go to war. कारण परमेश्वर चाहती नहीं आहाब एवं जेहोशाफात युद्ध क्षेत्र को जानतु So God spoke through Micaiah, please don't go to war. If you go, you will die. परमेश्वर मिकाया को द्वारा कथा कहिले तमे जदि युद्ध क्षेत्र को छिबो तमे निश्चित मरिबो But do you know what happened? मात्र कोन हला जानि छंती 28th text, 28th. 28 पद अनंतर इस्राएल रो राजा ओ यहूदा रो जेहोशाफात राजा रामत गिल्दियो को गले King of Israel and King of Judah, that is Jehoshaphat, both of them went to Ramoth Gilead for war, to make war with Syria. जिहुदा देशर राजा एवं इस्राएल देशर राजा जेहोशाफात एवं आहाब दुई जण रेमोत गिलियाद को युद्ध करिया पय गले So though they understood the will of God through Micaiah, yet even Jehoshaphat did not listen and he joined with Ahab and went to war. मिकाया को द्वारा परमेश्वर को इच्छा बा परमेश्वर को वाक्य सुनिले हेले मध्ये से माने युद्ध क्षेत्र को गले So this is the third incident. एहा मनकर तृतीय घटना Did Jehoshaphat listen to God here? Did he realize that Christ is his only hope? एटी जेहोशाफात परमेश्वर को वाक्य सुनिले कि ताके निजे अनुभव अनुताप करले कि केवल यीशु ख्रीष्ट ही मोर आशा बा भरोसा भूमि Though he wanted to know God's will, but when God said to him, he did not obey. He disobeyed and went to war. जेहेतु ताके परमेश्वर को इच्छा जानिबा पय चाहुतिले जेतले परमेश्वर ताको कहिले ताके निज इच्छा रे युद्ध क्षेत्र को गले Why? काहे The answer is in the 3rd verse and the 4th verse of 2nd Chronicles 18. द्वितीय वंशावली 18 अध्याय तार 3 एवं 4 रे उत्तर अछि We saw that Jehoshaphat promised already that I will come with you. एडी लेखा अछि जेहोशाफात पूर्वरु ही प्रतिज्ञा कले कि मु तम सहित युद्ध क्षेत्र को जीवी And then he asked Ahab, shall we ask God or not? तापरे कहउछंती आहाब को
कोन आमे परमेश्वर को पचारिबा This is what happening with many young people today. सेही परि अनेक युवक युवती मानक मध्य रे गोटू अछि Some young people, they get along. They have, some boys has girlfriend and some girls have boyfriend. They get along. अनेक युवक युवती माने पोजियो सांग करंती They promise each other that I will come with you till you die. Just like Joseph has promised Ahab, they promise we will be together until we die. से माने एको कार को प्रतिज्ञा करि थांती कि आमने मरिबा पर्यंत आमने रहिबा जेमिति जोसेफ प्रतिज्ञा कले But later they come to know through the word of God that this relationship is wrong. This relationship doesn't give glory to God. पर ईश्वर को वाक्य द्वारा तांगे जानिबे कि एई संपर्क परमेश्वर को गौरव आनु नाही Now they ask a question, can I separate or not? मु कोन करिबी Now they may ask a question, can we separate or not? एबे प्रश्न से माने उठै थांती कि एबे हमने अलगा हबाना कोन I'm talking about before marriage, okay, not after marriage. विवाह पूर्वर कथा They might be in a relationship before marriage, but now they understood that is not God's will at all. विवाह पूर्वर तांकर संपर्क थाए मात्र जेतेबेले जानिबे ताहा परमेश्वर को इच्छा नहे Now when the Lord says, okay, it is not good for you to continue in your marriage life, enter into your marriage life, still they will continue because they have already promised to the another individual. आ जेतेबेले परमेश्वर को वाक्य रे से माने जानिबे कि ए संपर्क रखिबा उन्नचित हेले मध्ये से माने विवाह संपर्क रखिबे कारण से माने ऑलरेडी पूर्वर तांगे प्रतिज्ञा करि सारिलाणी Young people, let me tell you, if you may be in relationship, but if you have found that relationship doesn't give glory to God before your marriage, it is a great time to leave that person. प्रिय युवक युवती माने परमेश्वर को वाक्य जदि विवाह पूर्वर तुमको कहू अछि ताहाले यह समय कि से व्यक्ति को आमन से व्यक्ति को ठारू आमन विचिन्न हबा Because you have promised, it doesn't mean that you should go against God's will. That promise is nothing. जेहेतु आमने प्रतिज्ञा करि अछु आमने आगु को बढ़िबा मतलब से प्रतिज्ञा किछि नहे परमेश्वर को सामने रे Jehoshaphat did that mistake. You know what happened to Jehoshaphat when he, after knowing God's will, yet he took step. You know what happened? जेहोशफात जेतेबेले आगु को बढ़िले जेतेबेले सत्य जानिथिले कोन हला Let us read last two verses. शेष दुई पद आमने पढिबा 2 Chronicles chapter 18 verses 30 and 31. द्वितीय वंशावली 18 अध्याय तार 30 एवं 31 मात्र अरामार राजा अपनार रथाध्यक्ष मानकु आज्ञा करी कहिथिला तुम्बे माने केवल इस्राएल रो राजा छडा सान की बड़ तांको संगे युद्ध न कर एणो रथाध्यक्ष माने जेहोशाफाट को देखि कहिले ए इस्राएल रो राजा तेणो से माने तांको संगे युद्ध करिया पई तांको आडको फेरिले मात्र जेहोशाफाट जाको पकाइले वो सदा प्रभु तांकर साहाय्य कले आउ परमेश्वर सेमानंको तांकर निकटरे फेरी जीवा पई प्रभु चाहिले. So the 31st verse says, the Syrian armies, they surrounded Jehoshaphat. And what happened? Jehoshaphat cried out. हमने 31 पद रे देखुछु सीरिया लोक माने जेहोशाफात को चारियाडे घेरी देले एवं जेहोशाफात परमेश्वर को चित्कार करी अन्वेषण कले. So he faced a danger. ताके विपद रे समीकरण हो अछंती. This is what happens when we have a marriage alliance with a heartless man, a sinful man. आ एई परि घटी थाए जेतेबेले आमने पापीमय व्यक्ति को सह आमने विवाह संपर्क बा प्रतिशत रखिथिबा. But what happened here? मात्र एटी कोन घटु अछि
who helped Jehoshaphat, even though he rejected the counsel of God, but God helped to Jehoshaphat. जेहेतु परमेश्वर को वाक्य जेहोशफात सुनिनो नाही हेले मध्ये परमेश्वर तांको सहाय्य करूछंती. What a love of God here. एडी हमने केते परमेश्वर को महान प्रेम देखुछु. We also sometimes we know that is God's will, yet we don't listen and we enter into some sort of trouble, but yet God helps us. आमे मध्ये सेही परी आमे जानिछु यह परमेश्वर को विरोध रे हेले मध्ये आमाने सेही परी परिस्थिति रे पड़ी थाउ हेले मध्ये परमेश्वर आमन को उद्धार करि थांती. What a love of God. केते महान परमेश्वर को प्रेम. What a God we have. केते महान परमेश्वर आमानकर. He helps us, he loves us, even we go away from his will. जेते हेले मध्ये आमन को प्रेम करती जेहेतु आमने परमेश्वर को इच्छा अनुसार भी दूरे गले मध्ये. My friends, let me tell you, Christ is our only hope, though we go away from him. ख्रीष्ट केवल आमानकर भरोसा भूमि जेहेतु आमने दूर को गले मध्ये. So we looked about 3 incidents, right? आमने तीनटी घटना स्थली देखि अछु. In the first incident, Jehoshaphat depended on God. प्रथम घटना रे जेहोशफात परमेश्वर को भरोसा कले. But in the rest of the 2 incidents, he did not depend on God. मात्र दुईटी घटना रे जेहोशफात परमेश्वर को भरोसा करि नाहांती. But God helped Jehoshaphat to take a right decision. He helped, God helped. परमेश्वर तांको गोटे दृढ़ निष्पत्ति नेबा पई परमेश्वर जेहोशफात को सहायता कले. But let us in our life not be like Jehoshaphat. आमानक जीवन रे आमा जेहोशफातଙ୍କ परि हेबा नाही. In all the time, प्रत्येक समय रे प्रत्येक परिस्थिति रे always प्रत्येक समय रे may we realize Christ our only hope. आमने अनुताप करिबा मने करिबा कि केवल ख्रीष्ट आमानकर आशा व भरोसा भूमि. From the morning till we sleep, let us always realize Christ our only hope. सकाळरू आमने सोइबा पर्यंत आमने आशा करिबा केवल ख्रीष्ट आमानकर आशा व भरोसा भूमि. Sometimes we depend God in the morning, but afternoon we don't depend on God. No, let us not be like that. May we realize अनेक समय रे आमने always सकाळे परमेश्वर को भरोसा करि थाउ एवं उपराना समय रे परमेश्वर को भरोसा करि न थाउ. only Jesus can help us. केवल यीशु ख्रीष्ट आमन को सहायता करि पारिबे. Whenever we want to take decisions in all the aspects, in all, let me say all the aspects, let us realize only Christ can help, only Jesus can help. प्रत्येक निष्पत्ति रे आमने निजको स्थिर करिबा कि केवल यीशु ख्रीष्ट आमानकर निष्पत्ति रे सहायता करिबे. In our big problem and also small problem, whatever it is, आमानकर स्थान समस्या बा बड़ समस्या रे both the small and big, let us think Christ our only hope, only Jesus can help us. सान बा बड़ समस्या रे केवल यीशु ख्रीष्ट आमानकु सहायता करिबे. May God help us. परमेश्वर आमानकु समस्त को सहायता करंतु. आमेन. Amen. आमेन. Amen. There are some prayer requests also. So those who do the closing prayer, let them please offer that prayer request also. Okay? Offer for the prayer. प्रार्थना अनुरोध आसी अछि जे शेष प्रार्थना करूछंती तांके से अनुरोध प्रार्थना मध्ये दया करी करंतु.
प्रभु को धन्यवाद हो बहुत सुंदर वाक्य तांको दास अमान को मध्य वितरण करियछंती विवाह विषय नहीं कि भाई नवीन को भी आम धन्यवाद देउछु भलो भाव अनुवाद करथिबा हेतु प्रभु को धन्यवाद हो जे कौन सी नेटवर्क बा बार सेमती किछि समस्या रहिला नहीं वर्तमान हम माने ए सभा को शेष करिवा अमान को मध्य अछंती पास्टर विजय कुमार लिमा सर तांको हमें अनुरोध करूछु आज रे सभा को शेष करिवारी मते प्रार्थना करबी आ जो दीप्तिनाथ रो भौणी रो पुओ जे भल नै ताको पाई टिक प्रार्थना करबी एवं कंदुगुडा यूथ पाई विशेष रे ध्यान रखिबे प्रार्थना करिवा निमंत पवित्रमय ईश्वर धन्यवाद गर्वसा स्तुति वंदना पाइबा एकमात्र जीवित ईश्वर मो अयोग्य पापी सकल धर्म पाप क्षमा कर धन्यवाद करुछि आज तुम पवित्र विश्राम बार प्रथम पर्याय पुणी आमान जूम मीटिंग रो वर्तमान प्रभु चतुर्थ दिन पर्यंत आनी अछ आ सुंदर वाक्य दे आमान को व्यवहार कर तुम पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा तुम विश्वस्त दास मानक दे विशेष कर प्रभु आज जो वाक्य आम शुणिलु ताहा जेपरि आम माने बुझिबो एवं से सबू को व्यवहार करी पुणी उत्तम विषय मान को सदा प्रमुख नाम रे जेपरि व्यवहार करिवो एति निमंते उपस्थिति आमर जेते जण अछु वर्तमान जूम मीटिंग रे समस्त को आशीर्वाद कर एवं जहा वाक्य दे आमान को व्यवहार करी अछो सेति निमंते ता समस्त विषय रे सुस्थिर भाव रे रखी ता व्यवहार करी आमानकर मंडली रे आमानकर युवा युवती आमानकर वयस्क पुणी प्रत्येक लोक मान को जेपरि आम माने से समस्त विषय शिक्षा दे आमे शिक्षित भाव रे ता व्यवहार करी अन्य मान को प्रस्तुत करम सहाय्य कर विशेष करी धन्यवाद करूची तुमर दास माने जो वाक्य दे आमान को व्यवहार कले ओडिया ट्रांसलेशन रे मध्य सहाय्य करिचो प्रांजल रे बुझिचो पुणी इंग्लिश रे जहा कि भाई नवीन बुझी कि आमान को बुझाइछंती सेति निमंते विशेष धन्यवाद पुणी सर परबिन को मध्य धन्यवाद करूची कारण हमको सुंदर भाव रे जहा जानी नथुरु एवं जहा बुझी नथुरु से सब आमान को बुझेबा निमंते एई शेष दिन रे आमान को व्यवहार करिसंती एति निमंते धन्यवाद करूची विशेष आमान को परिवार जो मीटिंग रे अछु जे कोनसी परिस्थिति रे जो जो जगह मान करे समस्त को प्रभु तुमे सुंदर भाव रे पवित्र आत्मा शक्ति रे सुस्थिर करिसो धन्यवाद करूची आ जे माने असुस्थ रे अछंती से मान को मध्य तुमार से पवित्र आत्मा हस्त द्वारा स्पर्श करी यीशु नाम रे प्रभु तुमे सुस्थ कर आ जो दिन आगामी दिन रे साक्ष्य प्रदान करी अनेक लोकंकर साक्षी सदृश से समर साक्ष्य दे आमाने व्यवहार करि परिबे तुम दया कर आ विशेष करी कंदउडार जो विषय प्रभु अछि से उपरे मध्य तुमर से पवित्र आत्मा हस्त द्वारा आवरी से गाँ रो चतुर्दिग रे तुमे आवरी रखी प्रत्येक विषय समाधान एवं प्रत्येक विषय आवश्यकता जोगाई प्रभु तुमे आशीर्वाद करी शैतान रो मंद शक्ति एवं अभाव को यीशु नाम रे दूर रख आ विशेष प्रार्थना करूछि जे शोककाल परिवार मानक रे अछि जा कोरोना माध्यम रे जो महामारी माध्यम रे मृत्युवरण करी अछंती एई पारे आमे से जगह रे पहुंची परिनो किंतु तुम्हार पवित्र आत्मार वाक्य पठाई से मान को सांत्वना दे तुम्हें सुंदर भाव रे प्रभु से मान को सुंदर परिचय नहीं साहस शक्ति बल दे व्यवहार करी पवित्र आत्मा शक्ति रे आवरी रख आ विशेष करी आउ जो दिन अछि बापा ए जूम मीटिंग शेष दिन पर्यंत पुणी आगामी दिन रे आउ थरे आमे जेपरि एकत्र हे ए वाक्य सुनिबु एवं ए शेष दिन रे तुमर पवित्र वाक्यर साक्षी तुमर आशीर्वाद दिन एवं आसुतिबा भयंकर दिन को जेपरि हम माने प्रभु अन्य लोक मान को मध्य चेतना दे परिबु एवं प्रस्तुत करि परिबु एति निमंते आमान को व्यवहार कर आ विशेष करी जो ईश्वर विरोधी कार्यक्रम जहा करवा चली पृथ्वी रे से सब मध्य जेपरि सत्यता रे जणेबा निमंते सदा प्रभु निकट रे आमाने मागी पुणी साहस शक्ति बल पाई कि जेपरि प्रभु से प्रतिमा पूजा अबाध्य पुणी अनेक असह्य विषय मान को जेपरि दमन करि परिबु शिक्षा दे परिबु एति निमंते दया कर पुणी वाक्य रे गीत रे जे त्रुटि भूल तले क्षमा कर रात्रि जाक जतन सुख निद्रा दे समस्त परिवार को आशीर्वाद कर आगामी पवित्र दिन रे जेपरि पुनर्बार तुम सहित जोगाजोग करी तुमर से चिन्ह रे जेपरि आमे माने प्रभु गौर प्रशंसा करी तुमर आशीर्वाद प्राप्त हेबु आउ विशेष करी आम माने जे शिक्षित है तुमर पवित्र आत्मा शक्ति रे बढ़िबो एते दया कर त्रुटि भूल जा करियो छु क्षमा कर प्रार्थना सुनिछ सब विषय मंगल दान दे
भूली जाइतिबा विषय परिवार प्रति तुम हस्ते समर्पण करी एही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम रे मागु अछि। आमेन। समस्त को धन्यवाद। हाँ, समस्त को आशीर्वाद करंतु। पुणी थरे देखा हबो आसंता काली संध्या 6:30 रे। समस्त को शुभ रात्रि एवं गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। Happy Sabbath to all of you and good